Hello and welcome to IDFC FIRST Bank presents ET Now Leaders of Tomorrow's Springboard in the city of Lucknow. As Uttar Pradesh aims to become a $1 trillion economy, the question becomes, is its small business sector at an inflection point? And what role will it play in making the state's mission and vision materialize? Well, here at the Leaders of Tomorrow's Springboard in the city of Lucknow, we bring you all the answers. On the show tonight, we feature an impactful keynote address by Bhavesh Jatania, Head Startup Banking of IDFC FIRST Bank, followed by an insightful fireside chat with Aditya Sharma, founder of Capital Tree. The city of Nawabs, Lucknow, is not just famous for its history and iconic culture, but also stands out when it comes to its dynamicity and its ability to keep up with the times. Today, it has established itself as a prominent economic engine and also a destination for high-end jobs. To venture into this ever-evolving city and what role it plays in fueling the growth of Uttar Pradesh's $1 trillion vision, we welcome you all to our Lucknow Springboard. I'll just quickly tell you as to why we do Leaders of Tomorrow and what is this Leaders of Tomorrow about, right? We believe at IDFC FIRST Bank that engagements are important. Engagements lead to business, right? And therefore, we create engagement platforms, and we'll speak about quite a few of them, right, as we go along in my discussion, right? And Leaders of Tomorrow is one such engagement platform which celebrates and empowers the entrepreneurs, right? Let's understand Uttar Pradesh, and who doesn't know this data, right? This data actually tells us that largest state in India by long margin, by long distance, right? Fifth largest in terms of economy size, or almost $300 billion की economy है हमारी, right? $300 billion, correct? और हम बात कर रहे हैं $1 trillion की, almost 3x, little more than 3x even there, right? And the timeline that at least I know of that we're talking about is about 26, 27, right? 3 years, 3.5 years, and we're talking about $1 trillion. India's economy today is about close to $4 trillion as I see today, right? And we are aspiring to get to $5 trillion in a year's time, right? तो ambitious तो है, क्या-क्या opportunity है देख लेते हैं. उत्तर प्रदेश largest state आज के दिन में है, right? $300 billion की economy है, fifth largest economy already है इंडिया में, right? In terms of economy, क्या-क्या different parts हैं? And 50% of the economy as we see today is traditional economy, right? Whether you talk about agro industries, whether you speak about textiles, right? Whether you speak about tourism, ये तीनों main component है और ये main component रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, right? Isn't that true? Correct. But what we're seeing now in terms of further growth is, if you see the ones that you see on your right-hand side, at least from there, right, is the growth that we see in terms of electronics. Do you see the opportunity in terms of semiconductor manufacturing here, that the hub that Noida is going to become, right, in terms of semiconductor industry? And obviously, I'm sure we will speak about the opportunity in electronics exports, electronics manufacturing, semiconductor exports, so to speak, right, on the same as we go along. Even ITES, जो कि आज के दिन में बहुत छोटा component है, but having spent about 30 years in banking and consulting, I know that's again another space which is dependent on the human talent as we see it, and this is a part of the talent as we understand, correct? So opportunity काफ़ी बड़ी है वहाँ पर ITES में भी we see huge opportunity and opportunity to grow. If you see, it's a very small component of the economy at this point in time. What works for us today? What's the biggest advantage of Uttar Pradesh? एक तो strategic location बोलोगे भाई कि नहीं बोलोगे, है ना? Strategic location wise, you can access the whole of India from here in that sense, correct? The second advantage that we obviously are talking about the resources that you have here. Third, obviously, the kind of policies that the government has and the kind of growth that we've seen thanks to those policies now, we got to an inflection point where you can kind of take off from here. So that's the kind of opportunity that we see, that's the kind of roadmap that we see from here. Quickly coming to entrepreneurship, and when I'm talking about entrepreneurship, I'm talking about the aspirational India, the aspirational businesses.
Those aspirational businesses today form the large backbone for India. One of the key sectors or one of the key areas where India has done extremely well, right, is in terms of startups, the innovation economy as we call it. बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं. In fact, in terms of a global ranking today, right, India is the third largest startup ecosystem already, while we are the fifth largest in terms of economy, the size of the economy. We are third largest already in terms of the startup ecosystem, right? And it's growing. It's growing at a huge pace, right? And we see this further getting accelerated as we go along, because the talent pool of India, whether it IT, whether be it information technology, or this is becoming the tech hub for the world. We see the growth of GCCs, the global capability centers, जो यहाँ पर इंडिया में आके बेसिस बना रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी सेगमेंट हो जा रही है हमारी ग्रोथ के लिए, right? But entrepreneurship in Uttar Pradesh, right? And the startups in Uttar Pradesh, if you see, the numbers in front of you will speak about essentially some 22,000, 23,000 startups. And not all of them are DPA registered for that matter. We see there are about some 14,000 startups are DPA registered. But see the kind of growth that we have seen in terms of startups in last 3-4 years, right? And especially post the COVID, this numbers kind of surged, right? बहुत बड़ी growth हो रही है in terms of startups that we see in Uttar Pradesh and across India as such, right? When I started looking at Uttar Pradesh numbers, there are certain numbers that surprised me as well, right? And those numbers in terms of number of unicorns and sunicorns, so to speak, as we call them, right? Large companies who started small and last couple of years really made it big, right? And those numbers are really amazing. Large part of it today is based out of Noida, right, being the NCR region, but I see that kind of spreading across to other parts of Uttar Pradesh as well, including Lucknow and Kanpur now. IDFC FIRST Bank was born. The IDFC FIRST Bank was born in 2018, late 2018, when the merger of IDFC Bank and Capital First happened in end 2018, right? And our approach since then has been that of a challenger bank. Now, a challenger bank क्या होता है? Challenger bank बहुत heavy term है. So let me just kind of break this down in terms of challenger bank, right? Challenger bank वो होता है जो essentially white spaces देखता है, market gaps देखता है, right? That exists in the market. Market में कौन सी opportunity, like आप सभी यहाँ पर जो entrepreneurs हो, आप market gaps ढूंढते हो and उसको use करके businesses बनाते हो. Challenger bank is essentially white spaces देखता है, market gaps देखता है, same industry में, right? And then उसको leverage करके आगे बढ़ता. Okay. Some of the product suite that we have in terms of various products, be it a current account to a working capital program. When we speak about working capital, I'm sure some of you have actually taken loans for working capital, right? And you know that those loans essentially are dependent on certain conditions, which means that you have to be at least in existence for 3 years, at least have a track record of profitability for 3 years and all. But when it comes to the startup segment, right, most of the startups we know aggressively invest in the business, and therefore profitability is a challenge. So we built a working capital program for pre-profit startups, mind you, pre-profit startups, which means even before you make profit, right, you can avail this working capital. It depends on certain parameters, though. It's not meant for anybody who's a startup. It essentially means that it's meant for people who have validated business ideas and raised some amount of funding. All right, I spoke to you about Leap to Unicorn. Leap to Unicorn is again a platform, a digital platform, a knowledge and connect platform which helps startups essentially engage with the ecosystem, gain knowledge out of it, and then pitch to the investors to raise money, right? And that's again another engagement platform. I would urge all of you to go and visit those platforms and check out and get the benefit from the platform there. So in conclusion, right, our ex-president Abdul Kalam Azad said, I'm very bad at Hindi, so anyways, dreams are not those who make you sleep, right? Dreams are those which take your sleep away, right? And with that note, guys, thank you so much again. Really appreciate it. Thank you. We continue to bring you all the highlights from the leaders of tomorrow's Springboard here in the city of Lucknow on the other side of this break, so don't go anywhere.
Welcome back. You're watching IDFC FIRST Bank presents ET Now, Leaders of Tomorrow's Springboard here in the city of Lucknow. As we witness industry titans share their take on the extent to which micro, small and medium enterprises are transforming the economic trajectory of the city of Lucknow. Well, let's get a bit granular at a cultural level. And when we talk finances, for whatever reason, I believe that there's oftentimes a lot of discomfort in terms of discussing finance, even if you're in the close circle of your friends, family, दोस्त, रिश्तेदार, वो एक हिचकिचाहट सी आई जाती है. जी. Right, when it comes to discussing finances. So what ultimately is the solution? Because in so many scenarios, this works to our detriment. So हेजिटेशन तो होती ही है, बट उसका जो परिणाम आया है कि टेक, फिनटेक जब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है देश में, तो टेक ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, क्योंकि लोग डिस्कस नहीं करते हैं अपने आसपास में, बट वो सर्च करते हैं उस बारे में जानकारी करते हैं, और विद दीज फिनटेक्स वो अपने आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू करते हैं. तो होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी रही है देश में, वहाँ पे मिससेलिंग्स बहुत हुई हैं. पीपल जो हैं वो डरे हुए हैं कि अगर मैं किसी से पूछता भी हूँ तो इज़ ही और शी इज़ गिविंग मी राइट एडवाइस. हमारे आसपास क्या उतने क्वालिफाइड लोग हैं या नहीं हैं. बैंकर्स, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ज़्यादातर अपने हित में ज़्यादा काम करते आए हैं लोगों के बगैर. तो अभी फिनटेक जो रोल निभा रहा है देश में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसमें एज अ क्वालिफाइड एडवाइज़र्स का आना, ऑन बोर्ड होना, जो कि देश में बढ़ रहे हैं. सेबी, एमफी, IRDA जो स्ट्रिक्टनेस के साथ KYCs एंड कंप्लाइंस में जो स्ट्रिक्टनेस ला रहे हैं, वो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है. और क्वालिफाइड एडवाइज़र्स का होना आसपास बहुत ज़रूरी है, तब जाके लोग खुल के बात कर पाएंगे. आवर फर्म कैपिटल ट्री, who are dedicated towards client-centric approach. We are having all the products in our kitty, but we never talk about the products. We generally ask for what is your requirement. I am not here to sell anything. So people will talk if the person is qualified enough. तो आदित्य, ऑलमोस्ट ये एक फॉर्मूला सा बन गया है कि इन टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी, जैसे कि आज का जो दौर है, यू नो, कि द सेफ बेट्स आर गोल्ड एंड रियल एस्टेट, राइट? और किस हद तक इसमें सच्चाई है, क्योंकि देखा जाए तो the opinions really run the gamut, and you can find examples on both sides of the equation that prove or disprove the theory. So how might you advise customers who come to you with that question? See, I advise only on the customer's situation. So gold, real estate, equity, debt, all products are very good and are very genuine at every stage. But the thing is, what is client's requirement? Like one of the panelists said, कि Lucknow have become a place of old people. I face that, and I was relating very much here in Lucknow. You will wonder, Mahanagar area is there, Nishatganj area is there, Gomti Nagar is there. These places are very posh, and you believe in me, ज़्यादातर घर खाली पड़े हैं. ओल्ड एज लोग रह रहे हैं, सिंगल पेरेंट रह रहे हैं. तो जब ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसके बच्चे बाहर हैं, तब उनके लिए गोल्ड घर पे रखना या रियल स्टेट में और इन्वेस्ट करना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं सरदर्द बन जाता है. जी बिल्कुल, मेक सेंस. और आपने म्यूचुअल फंड्स का जिक्र किया, और अगर कोई सर्वे किया जाए, राइट, आम जनता की, और कोई सर्वे किया जाए और पूछा जाए कि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, तो वो शायद यही बोलेंगे आम जनता कि म्यूचुअल फंड सही हैं. यस. और इसके अलावा वो बात आगे बढ़ती नहीं है, या तो अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ती नहीं है. सो आप हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाइएगा इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अलग हैं. सो बेसिकली टाइमिंग द मार्केट एंड टाइम in the market, we as a advisor always advocate towards time in the market, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला जी को गुरु माना जाता है, और जब ग्लोबली देखा जाए तो वॉरेन बफेट को.
बट उन्होंने भी अपनी सबसे ज़्यादा वेल्थ जो क्रिएट करी वो करी अपने 60 के एज के बाद, एंड ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। बट क्या आपको पता है उन्होंने जो अपनी वेल्थ क्रिएट करी वो सिर्फ 19.5%, 19.5% एनुअल कंपाउंडेड से करी। एंड in India, many of our fund manager in small caps and in mid caps are delivering 20% and above returns. Right. So we are doing a fantastic job. तो ट्रिपल बैगर की तलाश में है और मल्टी बैगर की तलाश में है, पर आपका कहना है और आपका मानना है कि इट्स टाइम इन द मार्केट दैट लीड्स टू दोस कंपाउंडिंग रिटर्न्स। Yes. And for the stock trader and the swing trader out there, उनके लिए टाइमिंग इन द मार्केट इंपॉर्टेंट है, बट अ पर्सन हु इज़ हैविंग वेरी लेस फाइनेंशियल लिटरेसी, कम नॉलेज है, धीमे धीमे करके इन्वेस्ट करना है, बहुत रिस्क नहीं लेना है, सो द बेस्ट वे इज़ टू गिव टाइम इन द मार्केट। सी, स्टेडियम में रह के खेलना ज़रूरी है, बाहर बैठना वाले को कभी मौका नहीं मिलेगा। समझ गई। और अभी जब बात आती है कैश फ्लो की, ओके, एंड स्ट्रीमलाइनिंग कैश बर्न, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स दोनों के बीच के फ़र्क को नहीं समझते, या तो पर्सनल कैश फ्लो एंड कॉर्पोरेट कैश फ्लो के बीच का जो फ़र्क होना चाहिए, व्हेन यू हैव अ फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंटरप्राइज, व्हेन यू ओन अ फैमिली बिजनेस, इट बिकम्स इनक्रेडिबली मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन। तो आप इस सिचुएशन में अपने कस्टमर को क्या राय देंगे? सी, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को या जनरली राय यही देता हूँ कि आप जब भी, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, एक तो फैमिली बाय फैमिली आते हैं या फिर जॉब को क्विट करके अपने बिजनेस में आते हैं, तो मैं उनको हमेशा राय ये देता हूँ कि आप अपने फाइनेंसर्स को पहली बात तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करो, और साथ ही साथ यू स्टार्ट पेइंग ऑन योर सेल्फ। मैंने भी जब जॉब छोड़ा और अपना बिजनेस चालू किया, सो आई स्टार्टेड पेइंग माई सेल्फ। आपने अपने आप को सैलरी दी? येस, एंड दैट प्रैक्टिस केप्ट माई पर्सनल फाइनेंस ऑलवेज ऑन अ हेल्दी नोट। क्योंकि जब जॉब छोड़ी, सो माई फर्स्ट टारगेट वॉज टू एस्टैब्लिश माई ब्रांड एज वेल एज ऑल्सो सिक्योरिटी ऑफ माई फैमिली। तो मैंने हमेशा ये प्रैक्टिस अपनाई कि जो सैलरी मैं वहाँ ड्रॉ कर रहा था, अगर मैं उसका 50%, मैंने ये अपना बजटिंग किया कि मैं अगर उसका 50% भी अपने आप को पे करता हूँ, सो ठीक है, काम चलेगा। एंड धीमे धीमे करके मैंने उसको इंक्रीज़ किया। सो बिजनेस की लायबिलिटीज़ और ओनर या फाउंडर की लायबिलिटीज़ डिफरेंट रहती हैं, बिजनेस की एसेट और पर्सनल एसेट्स डिफरेंट रहती हैं। मैं बहुत से यहाँ पे बिजनेसमैन को जानता हूँ, सभी लोग रिलेट करेंगे लखनऊ में, कि लोग सेपरेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। दे आर जस्ट लाइक कि माई एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 40, आदित्य माई एवरीथिंग इज इन बिजनेस, आई एम नॉट एबल टू सेव एनीथिंग। मेरा सब अभी बिजनेस में लगा हुआ है, मेरा सारा कैश फ्लो में है, मेरा सारा वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है। बट वॉट आई बिलीव, योर चाइल्ड्स एजुकेशन इज नॉट गोना स्किप, it's not dependent on how your business is performing. Your retirement is also somehow, if the situation is going good, then your retirement is sorted. But what if, so always have a second plan and pay yourself first if you are proprietor. And अगर आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। Right. And by way of a last question, Aditya, ऐसी कोई गलती जो आपके बहुत अक्सर क्लाइंट्स करते हैं, दोबारा दोहराते हैं, जो कि नहीं दोहराना चाहिए या बल्कि उनकी समझ के बाहर हो? मतलब what is that underlying recurring financial mistake that is best avoided? See, लोग ना, एक बहुत ही सिंपल टर्म है, वो है XIRR. That means what is the exact return that product is delivering. वो हर प्रोडक्ट में जिस दिन ढूंढना सीख जाएंगे, वो कभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मिस्टेक नहीं करेंगे। होता क्या है, पीपल फॉल फॉर स्टोरीज, दीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और एनी ऑफ द डेट प्रोडक्ट्स, कि सर यहाँ सेफ्टी ज़्यादा है, यहाँ पे सर सेफ्टी के साथ इंश्योरेंस भी है, सर यहाँ तो टैक्स फ्री है। सो व्हेन इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर, आप XIRR हर प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना चालू करेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिटर्न दिस प्रोडक्ट इज डिलीवरिंग, what is pre-tax returns and what is post-tax returns of every product. Just do a comparative analysis. That the people won't make
mistakes like this. Like you, in the start of the conversation, you talked about gold, you talked about real estate. I talk about FDs, post office investments, equity, hybrid schemes, PMSs, then for any of the investment option, the day you are going to start calculating the XIRR, that means the exact return of the product, you are not falling for any of the wrong investment. Well, Aditya of Capital Tree, thank you so much, sir, for sharing so many lovely nuggets of wisdom, and a huge round of applause once more, please. Thank you so much, Pooja, for inviting me. And with that, our coverage of the Leaders of Tomorrow Springboard in the iconic city of Lucknow comes to a close. I'm Pooja Jain signing off. We'll see you next time.